YouTube channel Prepare with Passion, and this is your class number 2 of Engineering Mechanics OPSC AIO Assistant Industries Officer channel टी सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं। तो पिलाने तुम मानक दुईटी क्लास मोर होता से दुईटी क्लास रे गोटे कमेंट आसला मोर जो कमेंट लिखा कि सार क्लास टी भल लगुच आपन क्लास आणतु किंतु अति दुखर सहित मत कहवाक पड़ा कि ओके दुख लगिला कि मुझे कौन सी वीडियो एपर्यंत अपलोड कर पारे ना किंतु वर्तमान पिला माने आउ थे मु क्लास नहीं कि आसूची वर्तमान रेगुलर हेबो आउ चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियो मते गोटे मोटिवेट मिलू से तीनोटी पिला जो सब्सक्राइब करथिले मते बहुत मोटिवेशन देले आ मु तांकरी पाई ही मु आज आउ थे वीडियो बनैबा आरंभ करिछि आउ तो पिला माने से तीन जन को मु क्षमा प्रार्थना करुच्ची जे मु वीडियो पकई पारलिनी किंतु वर्तमान पिला माने मु तुमको कहूची जे आज ठू से तीन जन सब्सक्राइबर जो माने सब्सक्राइब करथिले तांको पाई ही वीडियो बनाऊची आउ अन्य पिला माने भी सब्सक्राइब करंतु आउ उपकृत होंतु। तो चलंतु पिला माने आमे आज क्लास 2 टी पढ़िबा। क्लास 2 रे आज आमे कोन पढ़िबा? क्लास 2 रे आज आमे पढ़िबा फोर्स सिस्टम। तो पिला माने मन रख ए फोर्स सिस्टम रू भी क्वेश्चन आसी जाई पारे किछि कुहा जाय न पारे कारण क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन हबो तो तुम मान को एई जिंस गुडी को टिके ध्यान रखिबा पई पड़िबो। तो फोर्स सिस्टम तो पिला माने आमे फोर्स सिस्टम काहाकू कहबा तो पिला माने लास्ट क्लास रे आमे तो माय डियर फ्रेंड्स तो आमे लास्ट क्लास रे आमे कोन पढ़ितिले फोर्स विषय रे पढ़ितिले एंड इंट्रोडक्शन इंजीनियरिंग मेकानिक्स रे इंट्रोडक्शन भी करथिले। तो वर्तमान जो आमे क्लास टी करिबा ए क्लास टी आमे फोर्स सिस्टम विषय रे जानिबा ठीक अछि। आउ पिला माने मन रखिताओ एठू गोटे मार्क एठू तुमर गोटे क्वेश्चन निश्चय आसीबो एथिरे तुमे लेखिकी रखो गोटे क्वेश्चन वन क्वेश्चन मोस्ट फ्रॉम फोर्स सिस्टम वन क्वेश्चन मोस्ट गोटे क्वेश्चन आसीबो तुमर जो आम 150 टी क्वेश्चन मध्य गोटे क्वेश्चन एठू भी आसीबो फोर्स सिस्टम पर्टिकुलरली कहूँ फोर्स सिस्टम से टिके ध्यान देव पिला माने ठीक अच्छे। तो देख फोर्स सिस्टम आमर क्या कह जाए ठीक अच्छे फोर्स सिस्टम देख फोर्स तुम्हें जानी जिते बड़े धर गोटे वस्तु उपरे इफ some force are applied that is we call it push or pull ठीक अच्छे that is force we applied on a body। let's suppose if we applied multiple force okay single force जिते बड़े apply करछो whenever you apply a single force you called it as a force but that single force is only push or pull kind pull or push type so you call it that is force ठीक है जी force। and there are different type of force like tensile force compressive force okay so my dear friends now force system what is force system so if more than one force applied on a body if more than one force applied on a body then तुमर कौन हबो तो आमे जदि गोटे बॉडी को पुश करिबा हेले सी एपट को जीवो आगू जीवो कि जो पटे हेले तार टिके ही विल चेंज इट्स पोजीशन तो कौन हबो if we apply the force then it will change its position okay if we apply two force then what will be the result one from the front and one from the back then the change of position of the body depends on the forces F1 and F2 if F1 is greater than F2 then body will move in forward direction or to the right and if F2 is greater than F1 then body will let's suppose this is a body and we are applying two force let F1 and F2 तो केस नंबर 1
Case number 1 is if F1 is greater than F2, then this body A moves a moves in a moves in, since it is more, so it will move in this direction. The direction of force A moves in the direction of F1. Direction of F1. If F2 is greater than F1, then A moves in direction of F2. Okay, friends. So if another force applied on the body, that is, now the number of force is 3. So their effect, the effect of F1, F2 and F3 will be different. So the effect of this combination of force, that is, we will discuss later, but here in force system we will not think about the effect, but we only discuss about the combination of force. The combination of force which applied on a body is known as force system. So my dear friend, so what is force system? So when a group of forces when a group of forces acting on a body this combination of forces is known as force system. This combination of four is known as force system. So I write in color so that it will be helpful to identify force system. Okay, dear friends. So what is force system? When a group of forces acting on a body, this combination of forces is known as force system. So then we will move to classification of classification classification of force system. How force system is classified? So my dear friends, so classification of force system basically depend upon four things. Okay, if you remember, when we discuss about force, that force have four characteristics. Basically those characteristics are playing their part in the classification of force system. So what are they? We know, remember, what is the characteristics? Four characteristics, that is magnitude, direction, line of action and point of action. Remember these four, and these four character will play their role. Okay, so first parameter, the classification of force on the parameter. ठीक है जी, on the parameter, on the following parameter. तो कोई parameter है, in which parameter the force system is classified. So first is the plane on which the force lie. First parameter is what? The plane on which
on the plane on which forces act, the plane on which forces act, सेटा को हमें कौन कहिबा पिला माने, सेटा को हमें कहिबा कोप्लानर फोर्स सिस्टम, कोप्लानर फोर्स सिस्टम कौन पिला माने कोप्लानर फोर्स सिस्टम। तो कोप्लानर फोर्स सिस्टम हमें कहा कहिबा वीडियोटी को टिके सुनिबो खातारे राइट डाउन कर दबो, कारण से लिखला बेलू बहुत बेसी हे जाउची, तथापि मु तुमको लिखि दउची कोप्लानर फोर्स सिस्टम हमें कहा कहिबा। देखो ए फोर्स सिस्टम इज सेड टू बी, एटा तुमर सबुठी कॉमन रहते मन में, ए फोर्स सिस्टम इज सेड टू बी कोप्लानर फोर्स सिस्टम if all the forces if all the forces acting on the body are lies in a single plane, are lies body। तो एटा मु तुमको लिखि दउची पिला माने तुमको आउ टिके सुविधा हबो। ओके, ए फोर्स सिस्टम इज said to be coplanar force system, short रे एफएस लिखची, if all the forces acting on the body lies in a single plane, और एटा ऑन ग्रामेटिकल एरर टिके पिला माने देखियो मोर टिके इंग्लिश टिके दुर्बल। सो लाइज ऑन ए सिंगल प्लेन, तो फोर्स सिस्टम, ए फोर्स सिस्टम इज सेड टू बी कोप्लानर फोर्स सिस्टम इफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर लाइज ऑन ए सिंगल प्लेन, जदि सिंगल प्लेन रे। ओके, इफ नॉट जदि सिंगल प्लेन रे दे ऑल द फोर्सेस आर नॉट एक्टिंग ऑन ए सिंगल प्लेन, देन कौन हम, इफ नॉट देन इट इज नोन एज नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम। ओके, सो तुमर जदि गोटे प्लेन रे फोर्स गुड़ाक सबू एक्ट करुथुबे कौन गोटे प्लेन रे, तो प्लेन विषय तुम अवधारणा अच्छी, धर एक्स वाई आउ जेड ये तीन टा एक्सिस, तो तुम यहीटा हूँ गोटे प्लेन, एटा गोटे प्लेन, ठीक अच्छे मुझे कलर दे से तुमको जमी तुम एटा आउ गोटे प्लेन एंड देन थर्ड आउ एटा तुम आउ गोटे प्लेन, ठीक अच्छे। जदि तुम फोर्स गुड़ाक कौन हम, इफ द फोर्सेस धर यही प्लेन रे ही अच्छी फोर्स गुड़ाक यही प्लेन रे ही अच्छी हेले तुम कौन हम से कोप्लानर कहुब, आ जदि से अलग प्लेन रे लेट एग्जांपल तुम गोटे फोर्सटा एमती रहा यहाँ, ठीक अच्छे, तो ये तुम कौन हम फोर्सटा यही परिका रही परिका गोटे कथा ध्यान रख, यही जो फोर्सटा अच्छी ए फोर्सटा ए प्लेन रे नाही, यही फोर्सटा तुम आइदर ए प्लेन रे अच्छी, को प्लेन रे अच्छी ए प्लेन रे तुम रही जाउची बा ए प्लेन रे रही जाउची, ठीक अच्छे। तो से तुम यही फोर्सटा तुम ए प्लेन रे नाही, से एटा कोप्लानर फोर्स सिस्टम हबो नाही। जदि गोटे प्लेन रे तुम फोर्स गुड़ा रहिबो हेले कोप्लानर फोर्स सिस्टम हबो, ठीक अच्छे। तो तापरे आमे एठी हमर क्लासिफिकेशन फर्स्ट थिला प्लेन ऑन व्हिच इन एक्ट, सेकंड टा होची द लाइन ऑन व्हिच, तापरटा होची लाइन ऑन व्हिच फोर्सेस एक्ट। तो लेखाटा वर्तमान सिमिलर रहिबो, तो लाइन जदि गोटे लाइन रे, तो एटा तुमर कोन लाइन ऑफ एक्शन जदि लाइन ऑफ एक्शन फोर्स गुड़ाकर समान थाए फॉर एग्जांपल एटी तुम गोटे एग्जांपल दे दोचे, धर एटा गोटे फोर्स रो लाइनटा, ठीक अच्छे, एटा धर तुम F1 है, ये फोर्सटा धर F2 है, ये फोर्सटा तुम कौन है, देख आउ गोटे कलर देदेली
एटा भी आ गोटे कलर F1 F2 है। तो देख दीटा फोर्स रो डायरेक्शन टा गोटे लाइन रे ही अछि, तो दी जनकर लाइन ऑफ फोर्स समान अछि, लाइन ऑन व्हिच फोर्स आर एक्ट। दीटा फोर्स जो गोटे लाइन रे एक्ट करुथबे से फोर्स गुड़ा को तुमर कौन कह, से फोर्स गुड़ा को कह कोलिनियर, कोलिनियर फोर्स सिस्टम। कौन कह कोलिनियर कोलिनियर फोर्स सिस्टम। तो एटा कौन लिखा डिटो से लिखिबो जहाँ लिखा होता ये है। ए फोर्स सिस्टम इज सेड टू बी कोलिनियर फोर्स सिस्टम। कोप्लानर जगह लिखिदेव कोलिनियर फोर्स सिस्टम। ठीक अच्छे, निजे पॉज करके वीडियोटा पॉज करके पिला माने खातार लिखि दियो। कोलिनियर कोलिनियर जगह कौन लिखिबो कोप्लानर जगह लिखिबो कोलिनियर फोर्स सिस्टम इफ all the forces acting on the body are lies in a single line of action, lies in a single line of action। तो गोटे कथा मन रखिबो, if the all forces are lies in a single line of action। तो सेठी जो तुम्हें लिखा होता कौन लाइज ऑन ए सिंगल प्लेन जगह ये कौन लिख सिंगल लाइन ऑफ एक्शन हेले तुम सेटा की हबो की फोर्स हबो सेटा तुमर हबो कोलिनियर फोर्स सिस्टम। ता परटा पिला ता परटा देखो the point on which force act। तो पॉइंट लेट सपोज पॉइंट आउ एठी तुमर F1 भी पड़िला, एई पॉइंट रे तुमर F2 भी पड़िला, एई पॉइंट रे तुमर F3 भी पड़िला, F3 भी तुमर पड़िला। ठीक अच्छे, ये मुझे बुझेवा जोटा कहबी लिखा ठीक देखुव लिखो। ठीक अच्छे, तो देख धर यहाँ गोटे पॉइंट ओ रहा, ये ओ पॉइंट रे तुमर F1 फोर्स काम पड़ुची, F2 फोर्स पड़ुची आउ F3 फोर्स पड़ुची। को फोर्स पड़ुची F3 फोर्स पड़ुची। तो ये गोटे बिंदु रे पिला माने पड़ुचंती। रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, all the forces meeting on a single point, meeting on a single point। ठीक अच्छे, हेले तुमर ए फोर्स सिस्टम टा कौन कह ए फोर्स सिस्टम टा को तुमर कौन कह कनकरेंट फोर्स सिस्टम। कौन कह पिला माने कनकरेंट फोर्स सिस्टम। कौन कह कनकरेंट फोर्स सिस्टम। तो एटा केमती लिखिबो एटा देखो एटा भी सही परिका लिखिबो। देखो लिखिबो ए फोर्स सिस्टम इज सेड टू बी कनकरेंट फोर्स सिस्टम। ठीक अच्छे, जहाँ सेठी लिखिथिलो सेया लिखिबो। खाली मु तुमको लिखे दूची सेटा तो तुम निजे लिख लो, कि मु आउ थे लिखे दूची। देखो कनकरेंट फोर्स सिस्टम। देखो तो फर्स्ट लाइन तो समान ए फोर्स सिस्टम इज सेड टू बी कनकरेंट फोर्स सिस्टम। तापरटा मु लिखि दूची इफ all the forces acting on a body are meeting at a single point। तो कनकरेंट फोर्स का कनकरेंट फोर्स सिस्टम। ए फोर्स सिस्टम इज सेड टू बी कनकरेंट फोर्स सिस्टम। तो मुझे लिखी ना पिला माने। ठीक अच्छे, मुझे लिखी ना सेटा को तुमको लिखा पड़ो। रिमेंबर if all the forces are acting on a body, all the forces
acting on a body are meeting at a single point, तबे कौन कह concurrent forces. If not जदि गोटे पॉइंट रे मीट कर नथुए, if not meeting at a single point, then they are known as कौन कह पिला माने non concurrent force system, non concurrent force system. ठीक अछि पिला माने. तापर देखो, तापर थर्ड टा होची हमर कौन थर्ड टा होची parallel force system. थर्ड टा हमर कौन parallel force system. parallel force system. ठीक अछि parallel force system. ठीक अछि parallel force system. तो parallel force system काकू कहबा देखो पिला माने. तो एटी गोटे कथा आमे एटी लिखिबा parallel force system. parallel force system. तो देखो सही समान आमे आरंभ करबा a force system is said to be parallel force system केते बळे if all the forces acting on a body are parallel to each other. तो देखो ये फोर्स गुड़ा को लेट F1 F2 F3 तीनटा फोर्स तुमर गोटे बॉडी ऊपर एक्ट होची लेट this is the line of action, this is the line of action. So we know, so এই फोर्स गुड़ा को जो F1 F2 F3 तुम्हारे कौन होची parallel to each other. If all the force acting on the body are parallel to each other, then that force system is known as parallel force system. ठीक अछि parallel force system जदि parallel हेतिबो ओके देन ए parallel force system दुई भाग रे विभक्त करा जायछि. parallel force system classified into two types कौन गोटे तुमर होची like parallel force system आउ गोटे होची unlike parallel force system. टिके भूल हेची unlike parallel force system. तो what is like parallel force system and what is unlike parallel force system. ठीक अछि तो पिला माने देखो मु तुमको बताउछि तुम like parallel system कोन like parallel force system एटा होची तुमर unlike parallel force system. तो देखो आमे कोन जानले a force system is said to be parallel force system if forces acting on the body are parallel to each other. Okay, parallel to like केते बळे हेबो if two force parallel to each other and the direction also in same direction. So केते बळे हेबो when two parallel force are acting in same direction. What? Acting in same direction. जदि सेम डायरेक्शन रे दुईटा parallel force act करूथुबे हेले सेगुला कोन कहा जिवो like parallel force. So a force system is said to be like a parallel force system is said to be like parallel force system if all the forces acting on the body are acting in same direction, or if the forces acting on a body are parallel and acting in same direction, then that force system is known as like. And what is unlike? If the direction is different. If the direction is different. Very simple.
A force system is said to be unlike parallel force system if all the forces acting on the body, all the forces acting on the body are parallel to each other and acted in a opposite direction, not in same direction, opposite direction to each other, तो पिला माने मु तुमको कहि देछि भिडियोटी को सुनी कि खाता रे लिखि देबो हैला ठीक अछि। फॉर नोट्स टेलीग्राम चैनल टाको लाइक कर दो, टेलीग्राम चैनल टाको फॉलो कर दो, तुमर ये रे थिबो मो डिस्क्रिप्शन रे रहिबो टेलीग्राम चैनल सेठी ये हे जो ठीक अछि। Okay, this is the end of this class and we will next class आमे आसीबा। तो जो पिला माने सब्सक्राइब करिनो प्लीज चैनल टू सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो ठीक अच्छे। नोट्स पिला माने नोट्स तुमर मिल जिवो कोठू टेलीग्राम चैनल मो टेलीग्राम रू नहले मु वेबसाइट मोर गोटे ब्लॉगटा अच्छी वेबसाइट लिंक दे देबी तुमको कीप काम मुझे कीप काम मुझे लिंकटा दे देबी ठीक अच्छे।